Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. Today's topic is the Sultans of Delhi. Learning topics: establishment of Delhi Sultanate, Sayyid dynasty 1414 to 1451, Slave dynasty 1206 to 1290, Lodi dynasty 1451 to 1526, Khalji dynasty 1290 to 1320, expansion of Delhi Sultanate, Tughlaq dynasty 1320 to 1414, administration under the Khaljis and the Tughlaqs. Al-Biruni, while describing the plundering raids of Mahmud Ghazni 1030 CE, refers to many nearby towns such as Mathura, Kannauj, etc., but makes no mention of Delhi. Delhi became an important city only in the 12th century when it became the capital of Rajput rulers, the Tomars, known as Dehlika. The earliest reference to Delhi, it is an anglicized form of Dilli, occurs in an inscription on the famous iron pillar near Qutub Minar. अल-बरूनी जिन्होंने मल्टीपल जितने भी रेड्स हुए थे, लूट्स हुए थे, महमूद गजनी ने जो इंडिया में करे थे, उन्होंने काफ़ी सारी सिटीज़ के बारे में अपनी इंस्क्रिप्शन में, अपनी लिटरेरी सोर्सेज में लिखा है, लेकिन दिल्ली का कोई भी मेंशन नहीं किया गया है. दिल्ली का सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट मेंशन जो है वो कुतुब मीनार का जो आयरन पिलर है दिल्ली में, वहाँ पर लिखा गया है. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत. दिल्ली वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट टेरिटरीज विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत. इन द beginning of the 13th century, the Sultans of Delhi built many cities in the area that is now known as Delhi. तो दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट हुआ और प्रेजेंट डे दिल्ली जो है वो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हो रही थी. The rule of Delhi Sultanate can be divided into 5 distinct periods on the basis of dynastic rule. Dynasty period. The slaves c. 1206-1290. The Khaljis c. 1290 to 1320, the Tughlaqs c. 1320 to 1414, the Sayyids c. 1414 to 1451, the Lodhis c. 1451 to 1526. तो ये 5 आपकी मेन दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज थी जिन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड्स में दिल्ली पर रूल करा. Quick facts: The 7 cities of Delhi in medieval period were Lalkot, Shiri, तुगलकाबाद, जहांपनाह, फिरोजाबाद और कोटला, दीनपनाह एंड शाहजहानाबाद. तो उस प्रेजेंट टाइम में जो एंशिएंट टाइम में या मिडिवल टाइम में दिल्ली की 7 मेन सिटीज थी, उनके नाम आपको यहाँ पर बताए गए हैं. Sources of information. Historians have learnt about the Delhi Sultanate from archaeological and literary source material. The archaeological source material includes buildings such as forts, tombs and places of worship and articles such as weapons, tools, coins, clothes and ornaments. The literary sources include the writings of travelers, scholars, officials and court historians of the period. Being close to the court, these authors wrote mainly about life in urban administrative centers. Their works do not say much about rural life. तो आपकी दिल्ली के बारे में अलग अलग आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज में बताया गया है. जितने भी आपके रिलीजियस प्लेसेस हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, कॉइन्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनमें दिल्ली के उस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती थी उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन बताई गई है. Ibn Battuta's Rihla gives us valuable information about life during Sultanate period. The court historians who were patronized by the rulers wrote tarikhs, histories of the period. However, they usually wrote to please their patrons. This is one of the drawbacks of scholar Minhaj us Siraj's works. Historians Jia-ud-Din Barani's Tariq-e-Firoz Shahi, however, gives a fairly unbiased picture of the reigns of the Khaljis and the Tughlaqs. तो जितने भी आपके कोर्ट पोएट्स हुआ करते थे वो अपने ही रूलर्स के बारे में लिखा करते थे अपने पेट्रन्स को लुभाने के लिए. इसीलिए इनके जितने भी लिटरेरी सोर्सेज हुआ करते थे वो यूजुअली बायस्ड हुआ करते थे. लेकिन कुछ ऐसे भी लिटरेरी सोर्सेज हैं जो खलजीज और तुगलक्स के बारे में अनबायस्ड होकर यानी कि बिना किसी भेदभाव के बता. स्लेव डायनेस्टी 1206 to 1290. Qutbuddin Aibak was originally Muhammad Ghori's slave. Hence the dynasty established by him is called the slave or Mamluk dynasty. Mamluk means slave or son of a slave. He belonged to Ilbari Turks who were the slaves of the Turkish sultans. He established the Sultanate in 1206 and ruled for 4 years from 1206 to 12
1210. The second ruler of this dynasty was Iltutmish, 1210 to 1236. He was the son-in-law of Qutbuddin Aibak. He was succeeded by his daughter Razia Sultana, 1236 to 1240. She was the only woman ruler of both the Sultanate and the Mughal period who followed them. The last of these sultans was Ghiyasuddin Balban, Razia's successor Ghiyasuddin Balban, 1260 to 1287, considerably expanded the Sultanate territory from just Delhi and UP over whole of North India, although he faced stiff resistance from Rajputs and other rulers of the Punjab. The Rajput dynasties like Tomars of Gwalior, the Ranas of Mewar, who ruled central India, put up a stiff resistance. Balban died in 1287. His grandson, the last ruler of the slave dynasty, was murdered in 1290. तो 1206 से लेकर 1290 तक स्लेव डायनेस्टी में अलग अलग रूलर्स आए. कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले इसकी स्थापना करी, सबसे पहले ये रूलर थे और वो इससे पहले मोहम्मद घोरी के स्लेव थे, दास थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी डायनेस्टी का नाम भी मामलुक डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी रखा है. उसके बाद अलग अलग सक्सेसर्स आए और सबसे ज़्यादा जो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट है इस डायनेस्टी का वो ये है कि इसी टाइम पे एक ऐसी महिला को देखा गया जिसने रूल यहाँ पे करा था, जिनका नाम है रजिया सुल्ताना. सिर्फ यही एक ऐसी महिला है जिन्होंने इनके बाद आने वाली डायनेस्टीज में भी रूल करा है. खलजी डायनेस्टी 1290 to 1320. The founder of Khalji dynasty was Jalaluddin Khalji, 1290 to 1296. He was very old when he ascended the throne. He was not a strong ruler. He was killed by his nephew Alauddin Khalji, 1296 to 1316. Who replaced him. He was an efficient administrator. He was replaced by the Tughlaq dynasty. खलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे जलालुद्दीन खलजी और ये काफ़ी ज़्यादा वीक एम्परर माने जाते हैं क्योंकि इन्हीं के नेफ्यू जिनका नाम है अलाउद्दीन खलजी, इन्होंने उनको मार गिराया था और आखिर में इस डायनेस्टी को रिप्लेस करा था तुगलक डायनेस्टी ने. He established a vast empire. His conquest of Gujarat gave him access to its port and overseas trade. Alauddin also conquered Malwa and parts of Rajasthan. According to legend, he attacked Chittor, the capital of Mewar, in Rajasthan, to capture Padmini, the beautiful queen of Mewar's ruler Ratan Singh. इन्होंने जो अलाउद्दीन खलजी थे, इन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर अपना एस्टैब्लिश कर लिया था. गुजरात के भी काफ़ी पार्ट्स में इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट कर लिया था, जिसकी वजह से ये ट्रेड और सी रूट्स में इन्होंने अपना शासन करना चालू कर दिया था. और माना जाता है कि रतन सिंह की जो बेटी थी, मेवाड़ के ये किंग थे, उनकी खूबसूरत बेटी को पाने के लिए इन्होंने अलग अलग जगहों पर जैसे चित्तौड़ पर भी अटैक करा है. तुगलक डायनेस्टी 1320 to 1414. Ghiyasuddin Tughlaq, who ascended the throne in 1320, laid the foundation of Tughlaq dynasty. He ruled till 1325. He was succeeded by his son Mahmud bin Tughlaq, 1325 to 1351. He was an efficient administrator. The last Tughlaq was Firoz Shah Tughlaq, 1351 to 1388. After him, Delhi Sultanate started declining. In 1398, Turkish chief Timur invaded India. By then, Tughlaqs had become weak. There was no powerful dynasty and a new local governor took over Delhi in 1440. Ghiyasuddin Tughlaq तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे. उसके बाद आए महमूद बिन तुगलक, जो काफ़ी ज़्यादा एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे. उसके बाद आपके फिरोज शाह तुगलक आए और इन्हीं के बाद दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था. टर्किश की तरफ से जो वहाँ के एक प्राइम टाइम रूलर थे जिनका नाम था तिमूर, उन्होंने इंडिया में इन्वेड करा, दिल्ली सल्तनत का खात्मा किया और वहाँ पे राज करना शुरू कर दिया. Sayyid dynasty 1414 to 1451. This dynasty existed for a very short period. It was founded by Khijr Khan 1414 to 1421 CE. He helped Timur in his invasion. His successors, namely Mubarak Shah 1421 to 33, Muhammad Shah 1434 to 43, and Alauddin Alam Shah 1443 to 51 were weak rulers. सैयद डायनेस्टी जो थी, जिनको खजर ने फाउंड करा था और तिमूर को हेल्प भी करा था इंडिया में इन्वेड करने के लिए, काफ़ी छोटे समय के लिए डायनेस्टी आई थी और इसके जितने भी रूलर्स थे वो सारे वीक रूलर्स थे.
Lodi dynasty, 1451 to 1526. The Lodis were Afghan tribesmen. Many of them had entered India during Muhammad bin Tughlaq's reign. In 1451, Behlol Lodi founded the Lodi dynasty. In 1489, he was succeeded by his able son Sikandar Lodi, who was the greatest Lodi king. The last Lodi king was Ibrahim Lodi, 1517 to 1526, who was defeated by Babur, the first Mughal king, in 1526. It ended the rule of Delhi सल्तनत. तो लोदी डायनेस्टी जिसके फाउंडर थे आपके बहलोल लोदी, उसके बाद उनके बेटे आए जिनका नाम सिकंदर लोदी था, और सबसे लास्ट में आए सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी. इब्राहिम लोदी इस डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे. इसके बाद मुगल एम्परर जो थे बाबर, उन्होंने इस डायनेस्टी का खात्मा कर लिया और दिल्ली पर राज करना शुरू कर दिया. Quick facts. सिकंदर लोदी फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा इन 1506. जो आगरा सिटी है उसको 1506 में सिकंदर लोदी ने ही फाउंड किया था. Expansion of Delhi Sultanate. In the 13th century, Delhi Sultans ruled in Delhi, which was heavily fortified by garrisons. Sultans never controlled the hinterland of the cities and thus had to depend on trade, plunder and tribute for supply. It was not easy to control garrison towns in Bengal. Bad weather, distance and rebellion were biggest weaknesses for the Delhi Sultanate. जो दिल्ली सल्तनत थी वो अलग अलग पार्ट्स में शासन तो करना चाहती थी, लेकिन अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े गैरिसन्स थे, जैसे कि बंगाल, और यहाँ के जो लोग थे वो बेसिकली प्रोटेस्ट करा करते थे, जिसकी वजह से इसका एक्सपेंशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखी जाती थी. Initially, Delhi Sultanate aimed to consolidate the hinterland of the garrison towns. For this, forests were cleared in the Ganga Yamuna Doab and nomadic pastoralists were driven away. Peasants were made to encourage agriculture. New forts and towns were created to protect routes and provide regional trade. तो जितने भी आपके दिल्ली सल्तनत थे वो चाहते थे कि हिंटरलैंड गैरिसन्स को ये कैप्चर करना शुरू कर दे, जिससे कि इन्होंने अलग अलग जो यमुना गंगा दोआब पे जंगल थे उनको क्लियर कराना शुरू कर दिया, और यहीं से इनके एक्सपेंशन की जर्नी भी स्टार्ट हुई. द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत टुक प्लेस ऑन द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत. द एक्सपेंशन स्टार्टेड अंडर द रूल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड कंटिन्यूड टिल द रूल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. During this period, Sultanate troops get elephants, horses, slaves, territories and precious metals. By the end of Muhammad bin Tughlaq's rule, Sultanate armies had marched in a large part of the continent. Rival armies were defeated. For maintenance, the Sultanate armies had to collect taxes from the peasants. जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन होता गया, इनको अपनी आर्मीज में ऐड ऑन करने के लिए अलग अलग किंगडम से एलिफेंट्स, कॉइन्स, मेटल्स, ऐसी ट्रिब्यूटरीज दी जाती थी. इसके अलावा अलग अलग टाइप के आपके जो टैक्सेस हुआ करते थे वो दिल्ली सल्तनत को अपनी आर्मीज के मेंटेनेंस के लिए पीजेंट से कलेक्ट करने पड़े. मॉस्क, वर्शिप प्लेस ऑफ द मुस्लिम. अ मॉस्क और मस्जिद इज अ प्लेस वेयर द मुस्लिम्स prostrate in reverence to the Almighty Allah. Muslims in a congregational mosque normally say their prayers together. The most learned male is called as the Imam, leader of the prayer. He even delivers the khutbah sermons in Friday prayer. During prayers, the Muslims face towards Makkah, the holy shrine of Makkah. It is called Qibla. In India, it is towards the west. तो आपका जो मॉस्क होता है, जिसे हिंदी में मस्जिद कहा जाता है, ये मुस्लिम्स का एक प्लेस होता है जहाँ पे ये प्रेयर करते हैं. इमाम इनका लीडर होता है जो सेरमन भी देता है. ये मक्का की तरफ फेस करते हैं और इंडिया में मक्का की जो पोजीशन है वो वेस्ट की तरफ. एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द खलजीज एंड द तुगलक. अंडर दिल्ली सल्तनत द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 chief groups, namely aristocrats, priests, town dwellers and the peasants. The rich, nobles and the sultans lived in a great luxury. दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो आपकी सोसाइटी थी वो 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड थी. सबसे पहले थे आपके एरिस्टोक्रेट्स, उसके बाद आपके प्रीस्ट्स आते थे, उसके बाद टाउन ड्वेलर्स एंड देन लास्ट में आपके पीजेंट्स आते थे. The nobility checked the royal power. In 13th century, the nobility was composed of persons of foreign origin, belonged to 2 groups, namely Turkish slaves, nobles and the non-Turkish foreigners of high birth. Out of the 2 groups of nobles, the Turks were more
पावरफुल। उसके बाद आपके 13th सेंचुरी में 2 मेजर ग्रुप्स दिखाई दिए, जिसमें से कि एक टर्किश ग्रुप नोबल्स थे, एक नॉन टर्किश। इनमें से जो टर्क्स थे वो ज्यादा पावरफुल साबित हुए। Throughout the Sultanate period, the relation between crown and nobility varied according to the character and personal ability of the Sultan. The nobility was not a single united political order. They exercised check on the royal power, not as an institution. Throughout the Sultanate period, आपके ऐसे nobility crowns या फिर ऐसे लोग देखे गए हैं जो टाइम टू टाइम अलग अलग क्राउन्स में बैठे हुए लोगों के ऊपर चेक करते थे। जितनी भी पावरफुल कैपेबिलिटीज होती थी अलग अलग किंगडम्स में, वो यही nobilities check करा करते थे। Quick facts. The Ikta system was essentially a feudatory system, but it helped in giving legitimacy to Muslim rule. Initially जो आपका Ikta system था वो feudatory था, यानी कि आपको tributes में दिया जाता था, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये एक important weapon बन गया था मुस्लिम्स को अपनी heredity को attain करने के लिए। Ikta system. Under this system, instead of paying salary to an officer in cash, he was granted certain revenue arising from land or village. This land grant was called Ikta and their holders were called Iktadars. Under this system, revenue which was collected, a certain amount was kept as salary and another amount was to maintain soldiers for the Sultan. The officers were expected to keep detailed record of income and expenditure. इक्ता सिस्टम के अंडर में आपके जितने भी सोल्जर्स हुआ करते थे उनको सैलरी के रूप में लैंड दिया जाता था और उसका भी जो रेवेन्यू जनरेट होता था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था। एक पार्ट था सैलरीड पार्ट और दूसरा जो रेवेन्यू का पार्ट था वो लैंड के मेंटेनेंस के लिए या फिर आर्मी के मेंटेनेंस के लिए ही यूज करा जाता था। रेवेन्यू. लैंड वाज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू. 4 kinds of taxes were allowed under holy Islamic law. Kharaj was the land tax. Khamsa was tax levied on the booty captured in wars. Zakat was an additional tax on Muslim community and Jizya was the tax on non-Muslims. There were 3 modes of assessment during Delhi Sultanate, namely compounding, measurement and sharing. Alauddin raised taxation of the highest. इस टाइम पे जो आपका रेवेन्यू का मेन सोर्स था वो लैंड था और इसी में अलग अलग टाइप के टैक्सेस लिवाई करे जाते थे, जिसमें से कि एक टैक्स था जजिया जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लिवाई करे जाते थे। Recap. The Sultanate period 1206 to 1526 saw the rise of 5 dynasties: the Slaves, Khaljis, Tughlaqs, Sayyids and Lodhis. The Slave dynasty ruled from 1206 to 1290. Qutbuddin Aibak, Iltutmish, Razia and Balban were the important rulers of this dynasty. The Khaljis ruled from 1290 to 1320. Alauddin Khalji was the most ambitious and powerful sultan. The Tughlaqs 1320 to 1414 succeeded the Khalji. Muhammad bin Tughlaq and Firoz Shah Tughlaqs were the famous Tughlaq kings. The Sayyids ruled for a short time and were replaced by Lodhis. Behlol Lodhi 1451 to 1489, Sikandar Lodhi 1489 to 1517 and Ibrahim Lodhi 1517 to 1526 were the famous Lodhi kings. Lodhis were overthrown by Babur who started the rule of Mughals. तो आपने स्टूडेंट्स इस चैप्टर में दिल्ली सल्तनत के बारे में देखा किस तरीके से दिल्ली सल्तनत में 5 मेजर डायनेस्टीज थी, उनके अलग अलग रूलर्स थे। सबसे आखिरी में जब आखिरी की डायनेस्टी को खत्म किया गया वो मुगल एम्परर, जो सबसे पहले मुगल एम्परर थे बाबर ने खत्म किया था। तो स्टूडेंट्स विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं वो आपको खुद से करनी है।